सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा। फील्डिंग टाइम मैं यही सोच रहा था जब आज़िम खेल रहा था, क्योंकि आज़िम और मैं काफ़ी टाइम एक साथ खेले हैं कराची में क्रिकेट, सेम क्लब से हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि मैंने बोला इसके बैट पे नाइस बॉल आ रहा है, तो ये जितना लंबा लेके जा रहा है तो हम भी बैटिंग करेंगे उस टाइम पे। तो लेकिन टारगेट इतना नहीं था कि 85 होगा, तो माइंड में यही था 160 होगा, 154 होगा। लेकिन आज़म बहुत अच्छा खेला है। लेकिन मैंने बाद में यही सोचा जब बैटिंग करने गया हूँ, मैक्सी से यही बात की थी कि हम लोग जितनी पार्टनरशिप लंबी करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो उस हिसाब से हम लोग खेलते रहे हैं। बाद में बॉल इतना नाइस बैट पे लगना शुरू हो गया तो कि ड्यू की वजह से मुझे इतना यकीन था कि 1 ओवर 2 ओवर बड़े लगेंगे तो हम लोग इजीली टारगेट चेस कर लेंगे। So he's just saying, first of all, thanks to Allah because he's been successful in there. And when Azam was batting, he was assessing the pitch as well, and the pitch was coming on nicely. So they thought if they can take the game deep, they will cash in. So because Azam batted really well, the target was probably 10 runs, 15 runs extra what we would have thought. But because the pitch was due to Dew was playing very nicely, so him and Maxi had the plan to make a good big partnership, and once the partnership was on, the ball was coming onto the bat nicely, and from there they just thought, okay, we keep chasing hard, we keep chasing hard, we keep going hard, and they cash it in. And because he's played with Azam in same club in Karachi, so he knew, he was reading the game from Azam's bat, how to construct the innings. So he actually just followed the same pattern to take the game deep, and the partnership with Maxi worked actually, and that's where we chased that big target. Batting was in second, which thing basically helping the batter to score the big run? Basically, wicket or deep? कह रहा कि विकेट या ड्यू क्या चीज़ थी जो सेकंड बैटिंग हेल्प की है? विकेट तो इतना सीधा नहीं था, क्योंकि पावर प्ले में हम लोगों ने 3 ओवर में 12 रन किया हुए थे। तो हमें यही था कि हम लोग जितना विकेट पे रहेंगे उतना बैट बॉल, क्योंकि जब घास वाली विकेट पे सेट हो जाते हो ना तो फिर आप खुद ही आउट होते हो। उनकी हम लोगों ने पेस यूज़ की है बॉलिंग के टाइम पे, हम लोगों ने ज़ोर से नहीं शॉट मारी, और मेरे माइंड में यही था कि जितना मैं सीधा कम मारूँ उतना सही है। तो मैं पॉइंट की तरफ और फाइन की तरफ ज़्यादा खेलता रहा हूँ, क्योंकि वो आप अच्छी बॉलिंग कर रहा था। हमारे माइंड में यही था कि उसको सिर्फ 2 3 4 करना है और दूसरे बॉलरों पर हम टारगेट करेंगे। He's saying that the pitch was actually not that easy even with the dew, so they were just trying to use the pace of the bowlers, and that worked. It was hard to hit Wahab Riaz because he was really bowling well with pace and bounce. So they were just talking in the middle with Maxi that to make sure that not go hard against Wahab, but then use the other bowlers with their pace. And that helped them quite a lot to use the square boundary, which was one side was short, and they were going to cash in on spinners as well because the ball was not turning that much for the spinners. So they just paced the innings because the power play was very difficult. They only had 12-15 runs in the power play. It was very difficult to go against the new ball. But as soon as the ball got old, and they got used to the pitch and the pace, so then it became easier. Scored 150. Did PSL help you to grow as a cricketer? And Moin Khan is the head coach of Quetta Gladiators. Did you talk to him before coming to Bangladesh to getting some tips about Bangladesh cricket? PSL ने तुझे हेल्प किया है क्रिकेट इंप्रूव करने में, क्या तुमने यहाँ से आने से पहले मोइन खान से बात की थी कैसे बांग्लादेश में खेलना है? नहीं, मोहन भाई से तो मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन कि मुझे 1 साल 1 ईयर 2 ईयर हो गए हैं, मैं यूएई की तरफ से खेलने के लिए ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड करता हूँ। तो अबू धाबी T10 में मुझे जैकब ओरम था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। तो उसके बाद फिर हमारे कोचेज़ हैं, शहजाद भाई हैं, जैसे मैं कराची से खेलता था आज़म भाई बहुत टाइट करते थे कि हम लोग जिस नंबर पे भी खेलना चाहें हम लोग खेल सकते हैं, ओपनर से लेके पीछे तक। तो कोयटा ग्लैडिएटर से मैं 1 सीज़न खेला हूँ, दूसरे सीज़न फिर मैं यूएई से शिफ्ट हो गया, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं खेल सका। तो अभी मुझे अबू धाबी T10 की वजह से मुल्तान सुल्तान ने पिक किया था, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इधर से उधर जाके बेटर परफॉर्मेंस करें। He started off with PSL, obviously that helped, but because he's now shifted to UAE, he's trying to make his career out playing for UAE, and that helped him adjust to different pitches and different bounces. And then last T10 that happened in Abu Dhabi, he was with Jacob Orams as well, so he helped polish his game quite a lot, playing the role that he was given to him. And with his coaches back in Karachi, they used to really
drill into his mind whatever role you have in the team, you got to play that role. So if you're opening, you got to play your opening role. If you're batting in the middle, you got to play your role according to the game, according to the situation, and that has helped him. Now he's nearly qualifying for UAE to be international cricketer, and this year Multan Sultans have picked him, so he's looking forward to PSL this year. Usman, you usually open the innings, but in last match you batted at number 6. Now in today's match you are back to opening and you hit a century. What was the reason behind you coming to open? I mean, did you tell the coach to send you to up to the order? ओपन करता है। सबसे पहले तो हम लोगों को कोच ने यही बोला था कि उस्मान के तू 6 7वें नंबर पे खेलेगा। मैंने बोला कि आप मुझे जो टीम की रिक्वायर्ड है ना, ओपन से लेके 9 तक मैं उधर खेल सकता हूँ। मुझे इतना यकीन है कि मैं किसी नंबर पे भी जाके अगर सेट हो गया यार, थोड़ी लंबी पार्टनरशिप करूँगा तो मैं लंबा खेल जाऊँगा। तो लेकिन अनलकीली 4 बॉल 2 रन लास्ट मैच। तो फिर प्रैक्टिस में कोच से मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी लंबी, और कोच ने बोला कि तू अच्छा खेलता है तो मैं तुम्हें चांस दूंगा, तू ओपन खेल। मैंने बोला कोच जैसे टीम को रिक्वायर्ड होगी वैसे मैं खेल सकता हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ओपन पहला चांस मिला तो अल्लाह ने 100 करवाया और मैच भी हमारी टीम जीती, हमारी टीम के लिए बेहतर हुआ है। So last match, the role was different for him, as I said before, that he's very flexible to play whatever role he's given. So the previously role was given to him to finish the game, but that unfortunately didn't come through. But then he worked hard with the coach since in the trainings, and that communicated with coach and him that he should actually go hard up the top. So today his role was to open. So he's flexible, whatever number he's given, he's got a role to play and he'll play that role. So it's not necessarily all the time he opens, but whatever role he's given, he's ready to play for that role. And thanks to Allah Almighty, today his role was to open and finish the game, and he did that. Usman, you obviously you have a first class, you played in first class cricket and then you played in PSL too. But while Chirang Charandas posted your pictures in social media, there are lots of criticism in the comment section. I don't know whether you see it or not. How you deal with the criticism, or you see the criticism in the comment box? कह रहा है कि तेरे सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उसके बाद तो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? मैं तो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ना मेरा फेसबुक है, ना मेरा ट्विटर है। मैं सिंपल इंसान हूँ और सिंपल मैन हूँ। मेरा काम है ग्राउंड में जाना, क्रिकेट खेलना है, और जितनी भी वो आईडियाँ बनी हुई हैं वो सारी फेक हैं, मुझे नहीं पता होता। सिर्फ मेरा ये है कि मैं ग्रुप चलाता हूँ जो टीम का होता है, तो बस, और मेरा कोई काम नहीं है। क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? बस कभी किसी से इतनी बात नहीं की, अगर बात करके चले जाता है तो सर नीचे करके हम भी आगे चले जाते हैं। So he's got no social media account, either Twitter or all of that, and he says he accepts everyone's opinion. They have right to criticize, but he puts his head down and just concentrate on what his role is, what his job is to play cricket. Well, Usman, in the previous game, the night game, 194 runs were chased by Sixers. So did that give you some confidence during the innings break in the dressing room that you can also chase down 175 in the later innings, especially after you have the debacle with the batting in the opening game? पिछले मैच में समय चेंज हुआ था, चेस तो हाफ वे पे क्या कैसे कॉन्फिडेंस था कि हम चेस कर लेंगे? क्योंकि जिस दिन हमारा फर्स्ट मैच था ना, तो मेरे माइंड में यही था, क्योंकि जैसा ढाका का विकेट है ना, तो बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है। तो मेरे जो भाई हैं ना, नदीम भाई, वो कराची से वो भी खेलते हैं, तो वो मुझे यही बात फ़ोन करके समझा रहे थे। वो कह रहे थे जब ग्रिप होगा तो तब तूने अर्ली ऑन मिड विकेट नहीं मारनी, तो बॉलर को अपनी रेंज में लेके फिर करना है। और मुझे अपने पे इतना यकीन था कि जितनी मैंने क्रिकेट यूएई में खेली है ना, ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने खेली है। क्योंकि यूएई में ड्यू पड़ती है तो बॉल बहुत नाइस आता है। और जब हम लोग थोड़ा सा इतना सेटल हो गए ना कि अगर मेरे से नहीं लग रही थी मैक्स से लग रही थी, मैक्स से नहीं लग रही थी मेरे से लग रही थी, फिर हमें 10-10 करना आसान था, क्योंकि हम लोग सेटल हो गए थे। तो इजीली टू था कि अपने पे यकीन था कि हम लोग करेंगे। And you were aiming for playing for UAE. So do you have any ambition or any sort of time limit, like you have to complete 3 years or 4 years in UAE and then you will be qualified? So what will be the next tournament where we can expect you to see for playing for UAE?
यूए की तरह क्वालिफिकेशन का 3 साल होने वाली है, तो नेक्स्ट कंपटीशन कब है, कब तुझे इंटरनेशनल में देखेंगे? मुझे अभी मेरे 6 मंथ रिमेनिंग है, क्योंकि IL T20 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो UAE बोर्ड ने 6 मंथ रिक्वायर्ड बोला है कि तेरे 6 मंथ बाकी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे वो टाइम उधर गुजारेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह टीम में। He's got 6 months left for his qualification, so he's just looking forward to next commitment is PSL. ILT he couldn't go because of the qualification period is still 6 months left. So after that he'll qualify for international cricket for UAE. So PSL is next commitment. So then will be available for selection. Available for international cricket, yes. And then the UAE will have qualification. So how long you took for 3 years. 3 years? 3 years. You come to middle of October. How you adjusted with doing it today? पिच को कैसे एडजस्ट किया आज? पिच को ऐसे ही था, क्योंकि मैं तो 3 ओवर के लिए सामने ही नहीं आया। पहला ओवर मैंने सिंगल किया, पहला बॉल सामने नहीं आया, दूसरा बॉल भी मैक्स पूरा खेल गया, तीसरा ओवर पहला आया, तो यही देख रहा था कि बॉल अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैंने पहली बॉल पे सिंगल किया था। मुझे इतना हो गया था कि अब स्पिनर कोई भी बॉल करेगा ना, ब्रेक तो नहीं होना, क्योंकि आर्मर ही करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे ये था कि मैं अगर वी में खेलता रहूँगा तो थोड़ा सा बैट पे लगना शुरू हो जाएगा। विकेट तो बहुत ज़बरदस्त था। Earlier on, the ball was not taking any turn, so they were bowling a lot of arm balls attacking the stump. So earlier on, he just wanted to make sure that he plays straight in the V and get used to the pace and bounce of the pitch. Once he got used to, and because Maxi was hitting on the other end as well, that took a lot of pressure off him. So then once he got settled, pace of the pitch, and then he could go hard. Last 2 questions. Abid and Joel. What's the reason to move, to shift to UAE? And according to it, alongside it, You're up? Ask. UAE मूव करने की रीज़न क्या थी तेरी? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान से मैं डोमेस्टिक खेलता था, लेकिन मुझे अपने पे इतना यकीन था कि मैं बड़ी क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो मुझे सिंध से खेलने का मौका तो मिलता था, मेरी क्लब मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, अभी भी सपोर्ट करती है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पे इतनी एबिलिटी है कि मैं बड़ी क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो मुझे ये था कि अगर आप एक जगह रुके हुए, तो अगर आपको कोई क्रिकेट अच्छी नहीं मिल रही, आप अच्छे हो, तो आप दूसरी जगह हिजरत कर जाओ, मूव हो जाओ। तो उसकी वजह से मैं मूव हुआ हूँ और मुझे क्रिकेट मिली है। He was just looking for opportunities, and then because he was playing first class cricket in Karachi, but then got approached that he might get a future in playing for international cricket in UAE, so that's where he moved 3 years ago, and the opportunity started to come, and now he's comfortable that post 6 months he'll be able to play international cricket. So that was his ambition. Thanks to all. কালকে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বিকাল 4:45 চিটাগাং যাবে। প্র্যাকটিস শিডিউলটা আমরা জানিয়ে দেব পরে। Thanks guys. নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে 1000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন *167#। So how it feels to score the first century in white ball cricket? I think it's a great achievement for me, and I'm, I've been playing all around the world now. So, you get experience from all the, big stars. So, it's experience for me playing first time in the BPL, and I'm really happy that I got a century, but sad that we ended up at the losing side. Your father went and played some T20s at the back end of his career, and he scored the century in his first T20. You scored your first one in 93rd match. Finally, you caught up your father. Yeah, so basically I remember that innings when he scored a century against Lahore. So he played number 3. Usually I bat number 5, number 6, but this is the first time I'm batting number 4. So it was a great experience, and when you bat up the order, then you have enough overs on the board so you can, utilize your innings. So that's what I believe in. Well, Azam, is this your first trip to Dhaka, or you have been here before with your father or in some age group team or something else? If it's yes or no, depending on that, what have you learned from your father, or what you asked your father before coming over here to play in Bangladesh? I think, we had a good discussion when I told him that I've been signed by BPL team. So he was like, just stay on the crease for a bit long, because the wickets, they get a bit tricky in Dhaka especially. But I played today and it was on the similar side. I thought we could get we were 10-20 runs short, but in the end, I had to stay on the crease because 2 of the wickets, they fell back to back. So, and we usually don't talk about techniques, especially with my father. We only talk about tactics. So tactics is the main thing, and now I think technique doesn't matter in cricket. It does matter sometimes for the longer format,
But if you see some of the players who are playing these days, they were playing very, unorthodox shots. So that also works in T20. But you played 2 sweeps against 2 pacers. That reminds about your father. So have you learned that from him, seeing him in the TV or watching him playing? I think for T20s you have to learn some unorthodox shots because it's not a longer format, it's a shorter format, so you have to be on your feet all the time. So that's one of skill that I am trying to develop, and inshallah in the future I'll try to work on it and be a better player. How was the wicket in the first innings? I mean, Sami was struggling at the other end, but you made it look extremely easy. I think we were struggling in the past game as well in the power play, but once you know that you have wickets in hand, then you can finish the things really well. So I'm a firm believer of that you need to have wickets in hands, and then you can finish off nicely at the end of the overs. Okay, thank you. So let's have another winning. All right.